welcome to your favorite show, Planet Bollywood. This is me, Gunjan. And this is me, Sagarika Chetri, and here we are with the latest from the world of Bollywood and social media. लेकिन सबसे पहले, let's take a quick look at the trending stories of the day. हाउसफुल 4 के बॉक्स ऑफिस के नंबर्स को लेकर खड़ी हुई एक नई कंट्रोवर्सी। आलिया भट्ट के साथ गंगूबाई काठियावाड़ी में नजर आ सकते हैं अजय देवगन। फिल्म बाला में भूमि पेडनेकर के डार्क स्किन कैरेक्टर को लेकर मिल रही क्रिटिसिज्म पर आयुष्मान और यामी गौतम ने दिया अपना स्टेटमेंट। Well, this is Audience Reacts on PB segment जहां हम आपके टॉप कमेंट्स पढ़ते हैं और कल हमने कई सारी स्टोरीज डिस्कस की। वन ऑफ देम बीइंग बैजू बावरा, जो अनाउंसमेंट किया था संजय लीला भंसाली ने, जहां 2 स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स जो है वो प्ले किए जाएंगे एंड वी आस्क्ड यू दैट हु इज गोइंग टू बी फिटिंग इन दोज रोल्स। वहीं पर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। एग्जैक्टली, काव्या शनाया का कहना है, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट आलिया एंड कार्तिक यार। अंसल कहती हैं SRK, रणवीर एंड कंगना will be best choice for बैजू बावरा। क्या बात है, there is कंगना रनौत that's been included in this duo of शाहरुख and रणवीर। वहीं पर प्रेरणा का कहना है, I want to see अक्षय, ऋतिक and कटरीना together for बैजू बावरा फिल्म। फरदोस मशियात शरीफ कहते हैं प्रभास, रणवीर, कंगना फॉर बैजू बावरा और ऋतिक एंड करीना। रमीज का कहना है, देखा जाए तो दिवाली शाहरुख सर की और अजय सर की है। आई होप संजय लीला भंसाली सर बैजू बावरा में शाहरुख सर और अजय सर को एक साथ लाकर फैंस को रियल दिवाली धमाका दे दे। दिवाली तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अभी से तैयारी हो चुकी है 2020 एंड 2021 की, सो व्हाई नॉट। लेकिन इसके साथ साथ हमने कल एक और स्टोरी के बारे में बात की थी, विच वाज कल्कि व्हेन शी स्पोक अबाउट हर पोस्ट डिवोर्स स्ट्रगल्स। शी स्पोक अबाउट कि कैसे लोग बहुत जजमेंटल हो जाते हैं व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ टफ डिवोर्स, एंड हियर आर सम ऑफ योर कमेंट्स। पंकज गुप्ता कहते हैं इट्स देयर पर्सनल लाइफ, इट्स कंप्लीटली देयर चॉइस इफ दे वांट टू बी ओपन अबाउट द रिलेशनशिप और नॉट। वेल, ही हैज गॉट अ पॉइंट हियर। और हमारी लास्ट स्टोरी जहां हमने बात किया था वेयर सनी लियोनी हैड मेड अ पेंटिंग एंड हैड नॉट गिवन ओरिजिनल क्रेडिट्स टू द ओरिजिनल पेंटर, उस पर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी और उस पर आपके कमेंट्स। पंकज गुप्ता ने कहा, they should give credit to the original artist, but even they are human being. Why are the people who are commenting are being so judgmental? भाई जजमेंटल तो नहीं हो रहे हैं, बट ये जरूर कोशिश करें that the original artist जो इतना हार्ड वर्क करते हैं उनको अपना ड्यू क्रेडिट जरूर मिले। और इसलिए जरूरी है कि आप भी आपके कमेंट्स हमारे साथ शेयर कीजिए। यूज आवर हैशटैग एंड विल टेक योर टॉप कमेंट्स टुमारो ऑन आवर शो। मूवी हाउसफुल 4 को लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि कैसे हाउसफुल 4 के मेकर्स ने इन्फ्लेटेड नंबर शेयर किए हैं, बॉक्स ऑफिस नंबर शेयर किए हैं मीडिया और पब्लिक के साथ। इनफैक्ट ट्रेड एनालिस्ट और फिल्म मेकर्स के बीच में एक बहुत ही बड़ी जंग शुरू हो चुकी है ऑन सोशल मीडिया। राइट, एंड फिल्म प्रोड्यूसर रॉनी स्क्रूवाला ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है ऑन सोशल मीडिया बाय ट्वीटिंग दिस। ही सेज, इजंट इट टाइम एवरीवन रिपोर्ट्स बॉक्स ऑफिस नंबर्स एक्यूरेटली? He tags Komal Nahata and Taran Adarsh and says accuracy of information builds credibility, which the movie industry needs so badly, and not sure how long to appease egos will studios and all keep encouraging pumped up data on numbers. वेल सागर, ये बात तो क्लियर हो चुकी है दैट फिल्म मेकर्स एंड एक्टर्स के लिए बॉक्स ऑफिस नंबर्स आर वेरी क्रिटिकल, वेरी क्रूशियल, बिकॉज समवेयर इट आल्सो पंप्स अप देयर ईगो। लेकिन ऑडियंस से पूछ लेते हैं, डू दे केयर अबाउट दीज बॉक्स ऑफिस नंबर्स, या आपको सिर्फ इंतजार होता है एक अच्छी मूवी का? डू टेल अस इन द कमेंट्स डाउन बिलो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये जान सकें कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है, नंबर्स या गुड मूवी। Right, Gunjan, we've all seen that how box office numbers have become the center of attraction as soon as a movie releases. People want to know which film has opened with big numbers. There is a lot of competition on opening day number, opening weekend numbers, and we on Planet Bollywood as well give out the numbers, and उस तरीके से तोला जाता है कौन सी फिल्म सक्सेसफुल है, कौन सा एक्टर अब एक बैंकेबल स्टार बन चुका है जो ऑडियंस को खींच कर ले आ सकता है बॉक्स ऑफिस पर और थिएटर्स पर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन चुका है, और क्योंकि कोई ऑथराइज्ड बॉडी नहीं है इसलिए इन्फ्लेटेड नंबर्स आ सकते हैं, और उसी के बारे में रॉनी स्क्रूवाला जो है वो बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, हम एक बार देखते थे कि जब हम लोग रिव्यूज के बारे में बात करते थे, इट वाज सेड दैट हाउ सम मीडिया हाउसेस और सम पब्लिकेशन हाउसेस और सम क्रिटिक्स वर ऑलवेज बायस्ड टुवर्ड्स सम एक्टर्स और सम मूवीज। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है दैट नंबर्स में भी दे कैन बी बायस्ड। लाइक कोमल नहाता ने जब ये उनको ट्वीट किया गया, रॉनी स्क्रूवाला हैड एक्चुअली टैग्ड हिम इन द ट्वीट, तो उन्होंने अपने
डिफेंस में कहा, that's asking for too much in India in general. Nothing will be achieved till producers decide to be honest. Finally, the source of information is producers, distributors or exhibitors. If they don't stop providing inflated figures, getting real figures will be an uphill task for everyone. We have to understand trade analyst को ये box office numbers कहाँ से मिलते हैं? ये numbers उन्हें production houses से, exhibitors से, distributors से ही मिलते हैं. And if they are not being honest, automatically there will be inflated numbers that's going to be going out on the public domain. And another trade analyst, Sumit Kadel ने कहा, Houseful 4 official collection has become a laughing stock. It is a lie no one is willing to buy. Film industry trade is in shock. Sadly, Houseful 4 would be remembered for its collection manipulation instead of its merits. वहीं पर वो आगे कहते हैं that I raised a voice against Houseful 4 manipulation. Many eminent media portals covered it, inspired some industry folks to speak about the collection inflation. My job as a trade analyst is done and I'm proud of it. So problem यहाँ पर ये है कि आप किसकी बात माने, because there are so many numbers out there and now everybody is lashing out on each other. Also I think for a trade analyst to put out the numbers, अगर कोमल नहाता जी ने भी कहा है कि हमने सिर्फ वही numbers डाले हैं जो producers या film exhibitors ने दिए हैं, then I think there should be a disclaimer saying numbers obtained from producers and filmmakers. And अगर वो उनके खुद के numbers हैं, then the disclaimer should say from our own sources so that the credibility to these trade analysts can be given. Two, this is not the first time saga कि ऐसा हो रहा है. Krish 3 के time पर भी there were a lot of news that came out when the Roshans were saying that how it has been one of the biggest, highest grosses of the country, but it didn't turn out to be so. And उसके बाद Saif Ali Khan, Amir Khan have also spoken about, like Saif had said, he said, I would be a fool if I told you that nobody inflates figures. Amir Khan ने कहा, numbers have been getting fudged since forever. There is nothing new about it, but if one decides to manipulate figures, they are fooling themselves. There is no merit in doing that. And this is back 4 years ago. So, I mean, अगर उस time से हमें ये पता चलता जा रहा है that numbers are being fudged, I mean, it's high time that we talk about it. और गुंजन, जब सवाल ये उठता है कि numbers क्यों inflate किए जाते हैं, इसके कई सारे reasons हैं. Of course, जब दो फिल्में साथ में clash हो रही है, you want to, there is a big competition, और कौन सी फिल्म आगे बढ़ गई, कौन सी फिल्म फास्टेस्ट 100 करोड़ क्लब में घुस गई, आजकल इन चीज़ों में कंपटीशन हो रहा है. ऑल्सो ए लिस्ट एक्टर्स, उनमें भी ये कंपटीशन है. उनकी ईगो को मसाज करने के लिए भी प्रोडक्शन हाउसेस जो है वो इन्फ्लेट कर देते हैं नंबर्स. एंड रिपोर्टेडली वी हैव हर्ड ऑफ अ लॉट ऑफ मूवीज दैट हैव काइंड ऑफ रिपोर्टेड द नंबर्स विच हैव बीन इन्फ्लेटेड. लेकिन हाउसफुल 4 के जरिए ये चीज़ें सामने आई. देयर इज़ अ ट्रेड एनालिस्ट जिन्होंने इसका खुलासा किया, एंड now there is a conversation that's going on in the industry. Saga, looks like the only solution could be a third party who can come in and give in these numbers, because ultimately we don't care about the numbers. We care about good scripts, good actors getting their fair share. Having said that, we also have Akshay Rathi, film exhibitor, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, and he wants to say something about this whole incident. So hi Akshay, inflating figures is a very common practice that is being followed in Bollywood. So can you tell us something about that first? Sure. So I'll answer this in multiple parts. One, about Mr. Ronnie Screwwala's tweet. He's a very respectable member of the film fraternity, and in my opinion, he's a true blue pioneer. While he's raised concerns about the credibility of the collections that are reported, I completely agree with him about that. That credibility needs to be established, because that's the only way that investments and more development, better policies will come into play for the sector. So I completely agree with him on that. But the second thing I'd like to point out is that after that particular tweet you're talking about, Mr. Screwwala put out one more tweet, which clearly states that what he is, writing about is not in the context of any particular film, whether it's Houseful 4 or any other film that, has released of late. So that is one thing. Second, about the underreporting of the collections. See, as I see it, and I again reinstate the point of view that I put down on Twitter, which is that, if you are not a stakeholder in the value chain, if you're not the studio that's putting the money behind the film, if you're not the producer who made the film, if you're not the talent that has a backing stake in the profits of the film, if you're not a distributor of the film, if you're not an exhibitor of the film, and you are not the tax collecting authorities which are meant to collect GST or any other form of tax on the tickets that are sold, then I really wonder why do you, which means the audience or anybody else,
really care so much about what the movie is making and what the movie is not. Let the numbers be the prerogative or the interest or the, scope of lookout for the people who have something to do in terms of gain or lose from those numbers. I really think that, in this whole hoopla around the opening day numbers or the lifetime figures or the numbers of an X-star film versus Y-star film, we, I think, just stopped enjoying cinema for the storytelling that it brings to the table. The purpose of a film's release is to entertain the audiences. It's not to make them analyze how the business of the film is. फिल्म बाला का ट्रेलर रिलीज होने के बाद कई सवाल उठ रहे थे कि भूमि पेडनेकर का जो रोल था, जहां सावली लड़की का कैरेक्टर दिखाया गया है, क्या उन पर मेकअप करके उन्हें सावला दिखाया जाना चाहिए था या एक डस्की एक्ट्रेस को कास्ट किया जाना चाहिए था? इस पर आयुष्मान और यामी गौतम ने हमसे की एक्सक्लूसिव बात. चेक इट आउट. पहली बात तो हम एक्टर हैं और एक्टर का एक एक्चुअली सपना होता है कि हम अलग अलग कैरेक्टर्स करें, ऐसी चीज़ें करें जो लोगों के दिल को छू जाए, उनकी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन लेकर आ सके. और पहली जो प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि आप एक अच्छे एक्टर हैं, उस रोल में फिट बैठते हैं. नहीं तो क्रिकेटर का रोल एक्टर क्यों करता है, क्रिकेटर क्यों नहीं करता? ये बाला का रोल कोई ऐसे एक्टर को क्यों नहीं लेते जो ऑलरेडी जो गंजा हो, या फिर अपू राजा में कमल हासन का रोल किसी रियल डॉफ बंदे को क्यों नहीं दिया गया? ये क्वेश्चंस आएंगे हमेशा. पर बात यह है कि फिल्म इंडस्ट्री है वो कॉमर्स पे भी बेस्ड है. जो एक्ट्रेस को लोग देखना चाहते हैं, जो कमर्शियली वायबल भी है, जिसको देखने के लोग एक्साइटेड हैं, ताकि हमारी फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके. ये प्रैक्टिकल ऑप्शन आपको बता रहा हूँ जी. और उससे पहले तो ये कि शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, भूमि इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर. और वो जो कैरेक्टर को सूट करेगा वैसा ही उसमें मेकअप किया जाएगा. वैसे मेरे प्रोस्थेटिक्स हुए, वैसे उसके प्रोस्थेटिक्स हुए, और वैसे ही हर जगह होता है. वो बात भूमि और तापसी को लेकर सांड की आंख में भी हुआ था. व्हेन यू सी द फिल्म यू रियलाइज इट्स सच अ मोटिवेटिंग इंस्पिरेशनल फिल्म. पर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, ऑडियंस की बात कर रहे हैं, किनको देखना चाहते हैं उनकी बात कर रहे हैं. एट द सेम टाइम द मैसेजिंग इन द फिल्म शुड बी करेक्ट. वो आपकी मैसेज करेक्ट होना चाहिए, इंस्पायर करनी चाहिए, मोटिवेट करनी चाहिए, इम्पैक्ट लेके आनी चाहिए. Bhumi and I, we were discussing it yesterday, and she told me, and we are aware of what's been happening, and I think इसमें दो बातें हैं. पहली बात, I just feel आज के time में the downside of social media and this entire scheme of things, I think everybody has an opinion. Everybody just says something. Everybody just has to say something, or everybody just has to wants some of them just want to be a part of some, who's making the loudest noise. But actually, nobody's making. What are you trying to actually prove? That's really important. And I just feel sometimes it makes sense, sometimes it doesn't make any sense. And for me as an actor, it's very unlikely that an actor will just be physically the way probably a director has envisioned or conceived that character in their imagination. Like even if you watch Sanju, would you imagine a Ranbir Kapoor playing a Sanjay Dutt? I'm saying but the physical transformation is not just about coloration, it's not just about aging somebody, it's about a physical transformation for any actor. And I think, as he said, it's a positive challenge, it's a good challenge when you are seen by somebody whom you're just not physically. But first of all, yes, I think because she's an amazing actor, I think the first priority is you want a fantastic actor for the part and who can play the part. We heard them, but Saga, मुझे नहीं पता how much I agree with this, because मुझे ऐसा लगता है कि anyway, if you look at Bollywood, there's already so much of non-representation of dark girls जो होता है already चलता है. The fact is that इतने ज़्यादा opportunities नहीं मिल पाती if you're a little dusky or wheatish. And the fact is कि ये role एक ऐसा था जो उन लड़कियों के लिए it could have opened up the avenues, उन तरह की सांवली लड़कियों के लिए जिनके ऊपर discrimination होता है, right? We don't see them in mainstream cinema. So probably it could have been a good point, that a good time for them
to showcase their talent and back this role. लेकिन उसके बावजूद भी I think it was a well called for sort of a controversy or a discussion. Right, I mean ऐसे सवाल हर उस कैरेक्टर पर उठाया गया है जब भी एक एक्टर ने कुछ अलग करने की कोशिश की, चाहे वो ऋतिक रोशन हो सुपर 30 में जहां उन्हें आनंद कुमार का कैरेक्टर प्ले करना था, where he had to put on a little dusky skin on him with the help of makeup, चाहे वो शाहरुख खान का कैरेक्टर हो जहां वो एक डॉफ प्ले कर रहे थे इन द फिल्म जीरो, चाहे वो भूमि पेडनेकर इस कैरेक्टर में हो. सो देयर हैज ऑलवेज बीन, और चाहे तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर इन द फिल्म सांड की आंख जहां वो 60 इयर्स का एक कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, एंड पीपल स्पोक अबाउट हाउ ओल्ड वुमेन शुड हैव बीन कास्ट इन द फिल्म. तो हमेशा ऐसा होता ही है क्योंकि you know the actor so well already in real life. You know that they're not that dark, and you know it's a put on. For audience it's a bit difficult to digest the fact कि क्यों ये मेकअप करके, क्यों एक already सावली, चाहे वो राधिका आप्टे होती, चाहे उनको क्यों नहीं किया. But I completely believe that a casting is completely the call of the casting director and the makers of the film. I mean, no audience should be talking about which actor or actress should be cast in a particular character. Every actor has a right to feel liberated in the character they play till the time they do justice to that character. So what you're trying to say is कि अगर वो एक्टर है तो उसे किसी भी रोल करने का की आज़ादी होनी चाहिए. बिल्कुल, आप एक एक्टर इसीलिए हो क्योंकि आप डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले कर सकते हो. दैट्स व्हाई यू आर एन एक्टर. यू डोंट हैव टू पर्टिकुलरली प्ले ओनली अ फेयर स्किन्ड गर्ल. इफ यू आर फेयर स्किन्ड यू कैन. Absolutely. Yeah. I think that's a well made point again. लेकिन in an ideal world I would say that's what it should be. But we do not live in ideal world. Like जहाँ पर West में they handle or they're dealing with non-representation or not enough representation of African Americans or Asians, वहीं पर इंडिया में we're still dealing with the non-representation of dark skinned actors or older actors, and उसको ध्यान में रखते हुए, because again like I said it's not an ideal world, it becomes a talking point that we are saying कि अगर अब भी मौका नहीं मिलेगा इन जैसे लोगों को तो कब मिलेगा, because we are very sure कि when a role comes जहाँ पर उसकी साड़ी उड़ेगी या बाल उड़ेंगे, I'm sure a dusky girl is not going to get a chance no matter how good an actor she is. उन्हें एक ऐसा रोल ऑफर किया गया था where they had to play 60-year-old जब उन्होंने कभी नहीं अपनी जिंदगी में सोचा होगा कि वो ये रोल प्ले करेंगे. कभी कभी एक्टर को सेल्फिश होना पड़ता है. अगर उन्हें ये ऑफर किया गया है, they will definitely not deny it, and I don't think there's anything wrong in that. और मुझे ये भी लगता है कि ये सारी कंट्रोवर्सी तब उमड़ के आती है जब एक फर्स्ट लुक या जब ट्रेलर रिलीज होता है. फिल्म देखने के बाद क्यों लोग इसके बारे में बात नहीं करते? बिकॉज ऑफ कोर्स समवेयर द एक्टर्स हैव कन्विंस्ड यू थ्रू दैट फिल्म दैट दे कैन प्ले दैट रोल. जब भी दिस इज ऑल द प्री रिलीज का जो भी कंट्रोवर्सी और ये सारी चीजें सामने आती है तब ये बातें होती है. नाउ नो वंस टॉकिंग अबाउट सांड की आंख एट ऑल. True that, but हो सकता है कि शायद हम सवाल गलत लोगों से पूछ रहे हैं. I mean, actors are out there to prove their mettle. They are there to do their jobs. अगर उनको इस तरह का रोल मिलता है तो वो क्यों नहीं करेंगे? Probably the question is right, but being asked to the wrong people. The question should rather go to the filmmakers and the casting agents who could do better looking for these actors or giving more representation. But actors, no fault of theirs. If something comes to them, they are going to do that. And that is why सवाल आपके लिए है. क्या आपको लगता है कि सावले लोगों को, सावले एक्टर्स को उतनी अपॉर्चुनिटीज बॉलीवुड में नहीं मिलती, एंड दैट इज व्हाई द कंट्रोवर्सी अराउंड बाला actually started in the first place? Do tell us what do you think in the comments down below. The hashtag is trending. It's time for a short break on Planet Bollywood, but stay tuned because we have a lot more coming your way. संजय लीला भंसाली ने किया था अनाउंसमेंट फॉर दिवाली 2020 एंड 2021, जिसमें उनकी दो फिल्में गंगूबाई काठियावाड़ी और बैजू बावरा आने वाली है. और अब नए अपडेट्स ये आ रहे हैं कि रणवीर सिंह दिख सकते हैं इन बैजू बावरा और अजय देवगन दिख सकते हैं गंगूबाई काठियावाड़ी में भी. While we hear that Ajay Devgan has been offered both these films, we hear कि गंगूबाई काठियावाड़ी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल होगा उनका, जहाँ पर he has to play a gangster. Basically, this gangster falls in love with Madam, which Alia Bhatt is going to be playing. So it's going to be very interesting. We have already seen Ajay Devgan play a gangster, whether it's Once Upon a Time in Mumbai or whether it's Company and films like that. And we know that he really aces those roles only with his eyes and the intensity that he
has in his eyes. So we hear कि गंगूबाई काठियावाड़ी he is considering, but we also hear कि तानसेन का role उन्होंने reportedly turn down कर दिया है. We really have to wait for the confirmation. We try to get in touch, but we haven't really got any confirmation yet. Right, लेकिन जब तक वहाँ से confirmation नहीं आया, एक न्यूज़ जो और सामने आ रही है कि रणवीर सिंह would be playing the role of Beju in the movie Beju Bawra. And even for Ranveer Singh, after having seen him in 3 of Sanjay Leela Bhansali's film, भले वो बाजीराव मस्तानी हो या फिर राम लीला हो, I think this is going to be that other sort of side of him जहाँ पर musician बनकर वो सामने आएंगे. And I think he is completely going to kill it. We've seen him in Gully Boy, जिस तरीके से उन्होंने rap जो है वो जितना difficult होता है उसे बहुत अच्छी तरीके से निभाया है. And this is going to be interesting for him as well. And I'm sure he is going to ace it. And in fact कल हमने हमारे audience से भी पूछा था कि किन 2 बड़े actors को आपको देखना है बैजू बावरा में. And one of the name was definitely Ranveer Singh. And that's exactly reports का भी मानना है. We'll just have to wait for the official confirmation. जब तक ये फिल्मों के official announcements नहीं आते, speculations तो जारी रहेंगी. Myntra Fashion Superstar, a one of its kind show जहां इंडिया के पहले फैशन इन्फ्लुएंसर की खोज जारी है, has reached its finale जो होगा next Tuesday. और इस हफ्ते ऑलरेडी टॉप 3 कंटेस्टेंट्स चुने जा चुके हैं. अगर आपने इस हफ्ते का एपिसोड मिस किया है, then go watch it on Myntra and on Zoom. And here's a small sneak peek of the episode coming right up. Wow. I think we should give him a standing ovation. Yeah. Okay, today's hashtag is no filter. By the end of the week, we are going to have our top 3 guys. Are you excited? Yes. The toughest part is going to start now. I'm going to talk about my sexuality. I am my own gender. I'm normal. You're my favorite till now. Matlab, done yaar. I'm sure you had a party. Again, think out of the box. You guys are the top 3. We'll see you in the grand finale. Myntra Fashion Superstar, streaming on the Myntra app. Download the app now. That brings us to the end of episode on Planet Bollywood. Hope you enjoyed it. This is me, Sagarika Chetri, signing off. This is me, Gunjan Seni, also reminding you to stay tuned into our conversations. Until tomorrow evening, stay tuned only on Zoom.